Hello student, myself Pooham Jaiswal, nursing tutor of SRIN Shahdol, and today's topic jaundice. I will explain everything about jaundice. So firstly I will explain about definition of the jaundice. What is jaundice? It is a yellowish discoloration of skin, mucous membrane, sclera due to excess plasma bilirubin. Means when red blood cell break down, bilirubin plasma level increase in body, and after that yellowish color of the skin and mucous membrane are called jaundice. Yellowing is associated with the accumulation of bilirubin in the skin, most often caused by liver and gallbladder disorder. जो जॉन्डिस डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लीवर या गॉल ब्लैडर में कोई डिसऑर्डर होने की वजह से कॉज करता है. जॉन्डिस इज़ अ सिम्टम्स वेयर द स्किन एंड आइज बिकम येलो. जॉन्डिस कंडीशन में स्किन और आइज़ का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है. यू कैन सी हियर these girls, half face of the color is a normal and half face of the color is the jaundice. Next, causes of the jaundice. First, too much bilirubin being produced for the liver to remove from the blood. For example, patient with hemolytic anemia have an abnormally rapid rate of destruction of their red blood cell that release large amount of the bilirubin into the blood. मीन्स कि क्या होता है कि जब बॉडी का जो रेड ब्लड सेल होता है, ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो बिलिरुबिन होता है वो ब्लड से रिमूव नहीं हो पाता है और वो धीरे धीरे उसका कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह से पेशेंट में सिम्टम्स दिखने लगते हैं और पेशेंट सफ़र फ्रॉम द जॉन्डिस. नेक्स्ट, a defect in the liver that prevents bilirubin from being removed from the blood converted to bilirubin glucurin acid or secreted in the bile. मीन्स कि लीवर में कोई डिफेक्ट होने की वजह से लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन को प्रिवेंट करता है और वह ब्लड से रिमूव नहीं हो पाता है, और इस तरह से भी बिलिरुबिन कलेक्शन हो जाता है. नेक्स्ट, blockage of the bile duct that decrease the flow of bile and bilirubin from the liver into the intestine. For example, the bile duct can be blocked by cancer, gallstone, or inflammation of the bile duct. The decreased conjugation, secretion, or flow of bile that can result in jaundice is referred to as cholestasis. However, cholestasis does not always result in jaundice. मीन्स कि जो बाइल डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट ब्लॉक होने की वजह से, बाइल डक्ट कैसे ब्लॉक हो सकता है, या तो वहाँ पे कैंसर है, कोई स्टोन फॉर्मेशन है या इन्फ्लामेशन है, इन सब रीजंस की वजह से जो बाइल डक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो बिलिरुबिन, जिसकी वजह से उसका जो बिलिरुबिन को लीवर में शिफ्ट करने का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, और इस वजह से बिलिरुबिन का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है इंटेस्टाइन और लीवर में, और इस तरह से क्या करता है, जॉन्डिस कॉज करता है. Pathophysiology of the jaundice. Due to etiological factor, it's lead to red blood cell breakdowns and it's lead to hyperbilirubinemia. मीन्स कि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जॉन्डिस होता है. कर्निक्टरस होता है. कर्निक्टरस मीन्स कि येलो pigment collect in the brain tissue, and sometimes it may neurological impairment also. Seizures. We will see sign and symptoms of jaundice. Common sign and symptoms seen in individual with jaundice include like yellow discoloration of the skin, mucous membrane, the white of the eyes, light color stool, dark color stool and dark color urine, itching of the skin, nausea and vomiting, abdominal pain, fever, weakness, loss of appetite, headache, confusion, swelling of the legs and abdomen. These are signs and symptoms of the jaundice. Diagnosis of the jaundice. First, history. So we will assist of the jaundice by history taking. Physical examination, especially we will see and we will assess the skin and mucous membrane. Next, blood test, especially we will see bilirubin level in the blood test.
ultrasound especially for the liver and bile duct, CT scan, MRI, these are also especially for the liver and bile duct, liver biopsy, ERCP, endoscopy, retrograde cholangiopancreatography. ERCP is a procedure that involves the endoscopy and fluoroscopy to diagnose and treat problem of the bile and pancreas. So in ERCP, a bendable and lighted tube about the thickness of index finger is placed in the mouth and stomach, and this procedure consists of approximate 1 hour times. Next, endoscopy, ultrasound. These are the diagnostic evaluation, and by the diagnostic evaluation we will assess the jaundice. Next, jaundice treatment. Treatment depends on the causes of the underlying condition leading to jaundice and any potential complication related to it. Once a diagnosis is made, treatment can then be directed to address that particular condition, and it may or may not require hospitalization. जॉन्डिस पेशेंट का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड कॉजेज़ को अंडरलाइन करके हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं. फर्स्ट, ट्रीटमेंट में कंसिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एट होम विथ रेस्ट. स्पेशली जॉन्डिस पेशेंट को होम रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे. नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट विथ इंट्रावेनस फ्लूइड, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, इफ़ अ ड्रग टॉक्सिन्स इन द कॉजेज दीज मस्ट बी डिसकंटिन्यू. मीन्स कि अगर किसी ड्रग या मेडिसिन की वजह से जॉन्डिस कॉज किया है तो हम उसे डिसकंटिन्यू करेंगे. इन सर्टन केसेस ऑफ न्यूबॉर्न जॉन्डिस, एक्सपोजिंग द बेबी टू स्पेशल कलर लाइट और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल. अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस हुआ है तो हम उसे फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एडवाइस करेंगे. लास्ट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस. अगर ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस हुआ है, मीन्स कि लीवर, बाइल और पेनक्रियाज में किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट. बेनिफिशियल डाइट फॉर जॉन्डिस पेशेंट. जॉन्डिस डाइट, porridge, soft khichdi, curd rice and upma. These are the diet for the jaundice. Porridge means khichdi. Thank you.